Assalamu alaikum, this is Naveed Akram. I am a mechanical engineer by education and physics teacher by profession. Today we are going to start a new section on measurements. In this section we will learn about measurements of length, mass, volume, time, temperature, etc. We will also see how to use the calibration curves and how to take measurements from cathode ray oscilloscope. So the first topic in this section is measurement of length. मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो है ये आप ओ लेवल्स में काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए तकरीबन सारा ही कवर कर चुके हैं. सो वी विल रिवाइज इट हियर. सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसके अंदर आता है मीटर रूल और हाफ मीटर रूल और रूलर. दीज आर द सेम थिंग, ओनली द रेंज इज डिफरेंट, otherwise the principle and all the things are same. Second one is the tape measure, then the calipers, Vernier calipers and Micrometre Screw Gauge. So let's start measuring length using meter rule. Meter rule का जो least count होता है वो 1 millimeter और 0.1 centimeter होता है. I hope that you know how to take reading from the meter rule, but you have to take some precautions. For example, you have to avoid parallax errors, and for that you have to position your eyes such that your line of sight is perpendicular to the rule. Here you see this is your eye, and when you see it on the side of the object to take the reading, this line is your line of sight, and this line of sight must be perpendicular to the rule. This is the rule and this is your line of sight, so it should be perpendicular, it should be at 90 degree. If it is not at 90 degree like here, then the reading will be wrong. You can see if it is actually at 1, but if you see from this angle it will be 0.9. So you have to position your eyes so that your line of sight is perpendicular to the rule. That way you avoid the parallax error. Second is that you have to avoid using the zero end of the rule. The reason is that कि zero end of the rule हो सकता है डैमेज हो गया हो, या zero का जो पॉइंट है वो वैसे ही इसके एंड के ऊपर ना हो, तो उस सूरत के अंदर आपकी रीडिंग जो है वो गलत हो जाएगी. सो यू हैव टू अवॉइड यूजिंग द जीरो एंड. इंस्टेड आप क्या करेंगे, आप कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसे यहाँ पर 1 लिया हुआ है, आप 1 के ऊपर एक रीडिंग लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, उसके बाद उसके फाइनल पॉइंट के ऊपर एक रीडिंग लेंगे और उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक्चुअल जो लेंथ की रीडिंग है वो आ जाएगी. The third point is that you have to take several readings and calculate the average to minimize the random errors. And the fourth point is the poor calibration or incorrect markings. ये जो मीटर रूल्स होते हैं, ख़ासतौर पर जो वुडन और प्लास्टिक मीटर रूल्स होते हैं, दे आर वेरी चीप. और उसके इतने चीप होने की वजह ये होती है कि उनकी एक्यूरेसी, जो उनकी मार्किंग्स की एक्यूरेसी होती है, वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती. उसकी वजह से आपकी रीडिंग के अंदर फ़र्क आ सकता है. सो if you want you can calibrate it with some more accurate meter rule. ये जो स्टील के रूल्स होते हैं they are much more accurate than wooden or plastic rules. Next is the measuring length using tape measure. tape measure की अभी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर ही होता है. टेप मेजर्स की दो टाइप्स होती हैं. एक स्टील होती है जो कि आप अक्सर कारपेंटर्स वगैरह के पास देखते हैं. द नंबर 1 इज द प्लास्टिक क्लॉथ और फ्लेक्सिबल टेप होती है. इट इज़ यूज टू मेजर लेंथ अलोंग कर्व्ड सरफेसेस, और ये आप अक्सर टेलर्स के पास देखते हैं क्योंकि उन्होंने एक कर्व्ड सरफेस के तहत आपकी वेस्ट वगैरह मेजर करनी होती है. सो इसके अंदर भी हमने पैरेलक्स एरर को अवॉइड करना है. और द सेकंड थिंग इज दैट जब आप ये फ्लेक्सिबल टेप मेजर को यूज़ करें तो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज़ नॉट स्लैक और ट्विस्टेड, अदरवाइज मेजरमेंट्स विल बी रॉन्ग. Then we have the calipers. There are two types of calipers, external calipers and internal calipers.
जो एक्सटर्नल कैलिपर्स हैं वो आउटर डायमीटर्स को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, और जो इंटरनल कैलिपर्स हैं दे आर यूज्ड टू मेजर द इनर डायमीटर्स। इसमें भी आपने मेजरमेंट जो लेनी होती है वो मीटर रूल से लेनी होती है। तो वो सारी प्रिकॉशंस जो आपने मीटर रूल से मेजरमेंट लेते हुए लेनी है उनका इधर भी ख्याल रखना है। Now the next one is the Vernier Calipers. Its least count is 0.1 millimeter or 0.01 centimeter. Means it is 10 times more precise than the meter rule. Now Vernier Calipers is a versatile instrument में ये आउटसाइड जॉज होते हैं। अगर आपने इसका किसी चीज़ की लेंथ फाइंड करनी है या उसका आउटर डायमीटर फाइंड करना है तो यू प्लेस दैट ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द आउटसाइड जॉज एंड यू टेक द रीडिंग। फिर हमारे पास इधर एक इनसाइड जॉज होते हैं। अगर आपने किसी चीज का इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है तो इनसाइड जॉज यूज होते हैं, और अगर आपने किसी चीज की डेप्थ फाइंड करनी है किसी होल की लाइक दिस, यू हैव टू मेजर द डेप्थ, तो आप इसकी यहाँ पे जो टेल होती है, जो पिन इसको कहते हैं, इसकी मदद से आप उसकी डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। एंड नाउ वी हैव द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. It has been your friend in O levels. Its least count is 0.01 millimeter or 0.001 centimeter, means it is 10 times more precise than Vernier calipers and 100 times more precise than meter rule. Its common range is 50 millimeter, लेकिन ये इससे ज़्यादा कम हो सकती है. It can be 75 millimeter or even 100 millimeter, but the common range is 50 millimeter. It is used to measure objects that are too small to be measured with Vernier calipers and to measure small lengths with a precision greater than Vernier calipers. As I told you that it is 10 times more precise than Vernier calipers. So for measurements of objects that are too small where we need a greater precision, we use Micrometre Screw Gauge. This is the figure which illustrates the different parts of Micrometre Screw Gauge. Anvil is also called stud. Thimble scale is also known as circular scale. This is its line which is known as index line or datum line. Rest I hope you know all the things as you have studied it on levels. Now how to find the least count of the screw gauge? Least count is equal to pitch of the screw gauge divided by number of divisions on circular scale. Now what is pitch of the screw gauge? Pitch is actually the distance between two consecutive threads of a screw. तो स्क्रू गेज है, इसके अंदर जो स्पिंडल होती है उसका जो स्क्रू होता है उनके जो कंसेक्टिव थ्रेड्स होते हैं उसके दरमियान जो डिस्टेंस है that is known as pitch of the screw gauge, and it is equal to the minimum deviation on the main scale. So if you divide the minimum deviation on the main scale with the number of deviations on circular scale, we get the least count. Now here note that screw gauges come with different pitches. Some screw gauges have a pitch of 0.5 millimeter and the number of deviations on circular scale are 50, and in some other screw gauges the minimum deviation on the main scale is 1 millimeter and the number of deviations on circular scale is 100. So in both the cases the least count is 0.01 millimeter. See, if the pitch is 0.5 millimeter and the number of deviations on circular scale are 50, then least count is equal to 0.5 divided by 50, 0.01 millimeter. And if it is 1 millimeter and here 100, then again the least count will be equal to 1 over 100.01 millimeter.
So in both cases, our least count of the screw gauge is 0.01 millimeter. Okay, now let's see how to use micrometer screw gauge and how to take reading from micrometer screw gauge. This is important, and if you are not clear about it, you have to pay attention to it. First of all, you have to turn the thimble until this anvil and spindle touch the object. Then you have to turn the ratchet until it clicks. जब क्लिक की आवाज आ जाए तो उसके बाद आपने रीडिंग ले लेनी है. रीडिंग कैसे लेनी है? You have to first see the reading on the main scale. यहाँ पे रीडिंग आपने सबसे पहले देखनी है इसकी पिच कितनी है. इसकी पिच है 0.5 millimeter. So you have to take the reading 6, 7, 8 and 8.5 is the main scale reading. Then you have to see कि सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन, कौन से नंबर वाली डिवीजन इस डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है. Here it is 40th, so you will multiply 40 with the least count of the screw gauge, that is 0.01 millimeter, and thus you get the thimble scale reading. Then you add both readings to get the measurement that you want. 8.5 millimeter is main scale reading, 0.4 millimeter is the circular scale reading. You add them and you get the diameter of this wire, that is 8.90 millimeter. Okay ji, now zero error and zero correction. When you are not measuring anything and there is no gap between the anvil and the spindle, the smallest reading should be 0 millimeter as in this figure. Circular scale का जो zero है वो आपके डेटम लाइन के साथ मैच करना चाहिए. इन दिस केस देयर इज नो जीरो एरर, सो यू डोंट नीड एनी जीरो करेक्शन. नाउ सी दिस केस, इसके अंदर हमारा 1 to 3rd डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल की वो मैच कर रही है इंडेक्स लाइन से. इंस्टेड ऑफ 0 इट इज अ 3rd डिवीजन, सो दिस one is already showing a reading 3 multiplied by 0.01, 0.03 millimeter. इस वक्त कोई चीज मेजर नहीं हो रही. स्टड और स्पिंडल जो हैं वो एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं. there is no gap between them, but still micrometer screw gauge is showing a reading. So there is a zero error, and it is positive zero error because it is already showing some measurement. Plus 0.03 millimeter will be the zero error. Now how to correct this zero error is that when you take reading, your final reading, you will subtract this zero error from the actual reading. If it is 8.93 millimeter is the reading, you will subtract the plus 0.03 from this 8.93 and you get 8.90 millimeter. The another type of zero error is the negative zero error. इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा जीरो मार्किंग है वो डेटम लाइन से अबव है, यानी कि जो हमारी एक्चुअल रीडिंग जब हम लेंगे तो जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हमें रीडिंग देगा वो कम देगा, एक्चुअल से कम देगा. सो इस केस के अंदर हम जीरो एरर किस तरह फाइंड करते हैं कि हम रिवर्स डायरेक्शन में देखते हैं कि कौन सी डिवीजन इस इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है. हियर यू सी 1, दिस इज 0, रिवर्स डायरेक्शन में 1, 2, 3, it is the third division. So our zero error will be minus 0.03 millimeter. इसके अंदर भी जीरो करेक्शन हम इस तरीके से लेंगे कि हम अपनी रीडिंग में से इस जीरो एरर को, नेगेटिव जीरो एरर को माइनस कर देंगे. 8.87 माइनस 0.03 and minus would be plus, so 8.87 plus 0.03 will be 8.90 millimeter. Now there are some precautions which you must take while measuring with screw gauge. Number one, as we recently saw, that you have to find zero error and apply zero correction. You have to avoid parallax errors, and you have to take measurements multiple times and take average to reduce the random error.
Okay, now our next one is the measuring volume of a liquid in a graduated cylinder or measuring level of a liquid. It's very easy, you just have to take care of parallax error. आपकी जो आई लेवल है वो उसकी सरफेस से जहाँ पे आप मेजरमेंट ले रहे हैं उसके बराबर होनी चाहिए, उसके इक्वल होनी चाहिए. In other words, your line of sight must be perpendicular to this scale. Second thing you have to pay attention is the meniscus. Whenever a liquid is poured into some cylinder or some tube, due to adhesion and cohesion, the upper surface of the liquid becomes curved. This is known as meniscus. अब meniscus को आपने किस तरीके से रीड करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि meniscus किस टाइप की है. जो ये वाली meniscus है, it is known as concave meniscus. इसमें आपने इस meniscus की बॉटम लेवल को आपने मेजर करना है. यू हैव टू टेक मेजरमेंट्स फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम हियर. यहां से आप मेजर नहीं करेंगे, इधर से मेजर करेंगे. दिस फिगर आल्सो इलस्ट्रेट द सेम थिंग. दिस इज अ कनकेव मेनिस्कस एंड यू हैव टू रीड हियर द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस. Most of the liquids have concave meniscus, so mostly you have to take the bottom level of the meniscus. Some liquids like liquid mercury form the convex meniscus. It is of this shape. इस शेप की जब होगी तो आपने meniscus का टॉप लेवल के ऊपर रीडिंग लेनी है. So for concave meniscus you have to take reading from bottom of the meniscus, and for convex meniscus you have to take reading from the top of the meniscus. So ये दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है. नंबर एक पैरेलक्स एरर का और नंबर टू मेनिस्कस के लेवल का, कि आपने मेनिस्कस को किस तरीके से रीड करना है. तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.